Jai Hind student, I am Shashi Kumar. Today I am going to start cubes and cubes root. Clear students? Firstly, what is a cube? Look at here. Similarly, this is just like a process of square and square roots. For a given number x, we define cube of x is equal to x into x into x. It is denoted by एक्स क्यूब. क्लियर स्टूडेंट? जैसे स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ नंबर, एक नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो वो स्क्वायर होता है. और क्यूब में क्या होता है, एक नंबर का हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. सपोज लुक एट दिस एग्जांपल स्टूडेंट, जस्ट लाइक 5 into 5 into 5. क्लियर? दिस इज अ क्लियर. 5 into 5 into 5 multiplied by 5 25 and 25 multiplied by 5 we get 125. Clear student? Look at question number first. Evaluate 8 power 3 mean 8 का क्यूब निकालना है. सिमिलरली आप 1 से 30 तक आप क्या करें, जैसे स्क्वायर आपने लर्न किया 1 से 30 तक आप लर्न कर लीजिए. कॉपी पर नोट कर लीजिए. 1 into 1 into 1 is equal to 1, 2 into 2 into 2 is equal to 8, 3 into 3 into 3 is equal to 27. इसी तरह आप पूरा राइट कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बेनिफिट होगा. लुक एट हियर, जस्ट लाइक 8 into 8 into 8. क्लियर? 8 8 जा 64, 64 multiplied by 5 we get 512. Clear student? This is our answer. And second question, 1.2 and 1.2. Clear student? 1.2 into 1.2 into 1.2 and multiply by all number 1.728. Clear students? This is the square of 1 cube of 1.2. Sorry students, here cube. And here 4 upon 7. You will write here 4 upon 7 into 4 upon 7 into 4 upon 7. 4 multiplied by 4 16 and 16 multiplied by 4 we get 64 and here 3 4 3. Clear students? And this is root here 364 mean आपको 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है. ये अभी हम लोग ने क्या सीखा, क्यूब. अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब रूट. क्लियर स्टूडेंट? लुक एट, यू विल राइट दिस नंबर. Firstly, find the LCM. That's like 4 into 4 into 4. Clear student? स्क्वायर में हम दो का पेयर बनाए थे, यहाँ पर 3 का. जब कोई नंबर 3 बार है तो उसको कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम, और रूट रिमूव हो जाएगा. क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4. क्लियर? एंड सिमिलरली हियर 500 का एलसीएम निकालेंगे तो सपोज आप लर्न कर लीजिए 8 into 8 into 8. Look at here 8 into 8 into 8 and here 343 just like a 7. You will write here 7 into 7 into 7. That means 8 upon 7. This is your answer. Clear student? Now I am going to start next questions. Student, see this question, cube roots minus 125 upon 27. Look at with the help of this formula. जब माइनस होता है तो हम लोग माइनस क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं. -25 को we can write here 5 into 5 into 5 and 27 just like a 3 into 3 into 3. Clear student? And you will write here -5 upon 3. This is your answer. Clear student? This is your answer. And second formula, a plus b cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Clear student?
here find the cubes of 25 with the help of shortcut method. Clear? What is shortcut method? With the help of this formula we can solve this question. Firstly, make this bracket. Clear, students? And you will write here first number A and second number is a B. Clear, student? Look at here. Firstly, we will find the A square and multiply by A. A square means just like 2 to the 4. 4 into 2. Clear, student? Mean you will write here 8. Clear? And second step in a last, B cube just like a B square into B. Clear, student? B square into B. Firstly, B square just like a 25 and 25 multiply by 5. Clear? And write here 125. Clear, student? 125. And second step, B square into 3A. Just like B square means 25. 3A just like a 3 into 2. 3 2 just 6. You will write here 6 and multiply here 150. And here A square 3B. A square just like a 4. 3B means just like a 5 3 just 15. And you will write here 60. Clear? अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए और इस नंबर को इसमें जोड़ दीजिए. क्लियर? 2 5 + 1 6 here 1. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए. इन दोनों नंबर को यहाँ पे जोड़ दीजिए. 6 यहाँ 7. एक लाइन ड्रॉ करिए. नेक्स्ट नंबर इधर जोड़िए. क्लियर, स्टूडेंट्स? 15. That means just like your answer is 25 cube is equal to 15625. Yes, 15,625. अब ये चार्ट स्टूडेंट आप यहाँ पे बना के तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा. एंड ये फॉर्मूला आप लर्न a + b क्यूब इक्वल टू a क्यूब + 3ab स्क्वायर + 3ab स्क्वायर + b क्यूब. लुक एट हियर सिमिलरली a क्यूब सेम फार्मूला 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर plus b क्यूब. क्लियर, स्टूडेंट? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस. Student, see question number 4. Find the smallest number by which 1323 must be multiplied so that the product is a perfect cube. Clear, student? Firstly, find the LCM of this number. Clear? This number divisible by 3. 3 4 ja 12. Carry 1 1 2 12. 3 4 ja 12 and 3 1 ja 3. Clear? Again divided by 3. 3 1 ja 3. 1 4 14. That means 3 4 ja 12. Carry 2 2 1 21. 3 7 ja 21. Clear, student? Again 3 7 ja 21. Clear? Again divided by 3. 3 4 ja 12. 2 carry 2 7 just like 27. And 3 9 ja 27. And this 49 divided by 7 you will write here 7. Clear, students? And 7 divided by 7. Clear? You can see here in the form of cube roots 3 into 3 7. One number is missing. That's why we can write here
to make it perfect cube, it must be multiplied by 7. Clear students? Thank you students.